Yeah, good evening, everybody. Welcome to the session. I think, yeah, we are dot on time, ekdam, but I'll just wait for at least 20 seconds, I guess. But Dheeraj has joined. Hi, Dheeraj. And to check your message, I'll also play the same on my mobile. So just give me a minute. Let's give 30 seconds to all to join. Yeah, I think we are there. Yeah, I can see all your chats. तो मार्केट आज जो हमने देखा है ना, वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था. इफ यू हैव फॉलोड द ट्रेंडिंग ओआई, इट वाज क्लियरली विजिबल कि 12:30 बज के 50 मिनट के आसपास धीरज आई थिंक 12 मैंने देखा था 12:51 को ओआई में क्रॉसओवर्स आए थे ट्रेंडिंग ओआई में. एनीबडी नोटिस दिस? या आई जस्ट वेट फॉर योर यस और नो. देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ट्रेंड नहीं है, और हफ्ते में 2 एक्सपायरी है, मंगलवार और गुरुवार के दिन. सो मेक श्योर ट्रेंडिंग है ओआई पे और ऑप्शंस चार्ट्स पे यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज यू विल फाइंड इट टफ टू ट्रेड सच मार्केट्स. ये मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा आज की तारीख में. सो बिफोर वी स्टार्ट मैं डिस्क्लेमर रीड आउट कर देता हूँ. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. देखते 26 तारीख 26 मई को ट्रेंड क्या है. देखिए वॉलेटिलिटी है, ट्रेंड नाम की चीज अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे मीडियम टर्म हो. हर एक जगह एक रेंज में वॉलेटिलिटी है और गैप्स टू गैप्स मार्केट ट्रेड कर रहे हैं. चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, ऐसी कोई बनी नहीं है. रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड अदर टेक्निकल स्टडी. ओके शबा की थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है. Just give me a second, I'll share my screen. Yeah, I need to read out the disclaimer. I guess now the screen is shared. Shabaki? Yeah. So I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Just all the participants जो first time join करने, for them I'll just show you. This is my Nifty. I had set up the all the strike price मैंने set लिया था. ATM plus and minus 6, 24,000 का बेस लेके. This is 24,000. या धीरज अगर आप देखो ट्रेंडिंग ओआई पे मॉर्निंग से कॉल पुट राइटिंग चल रहा था, बट जो बड़ा ट्रेड आया वो 12:42 पे 12:42. देन इन मार्केट व्हाट हैपेंड, द कॉल राइटर्स टुक ओवर फ्रॉम देयर. सो 8 करोड़ के करीब करीब 9 करोड़ के कॉल्स ओपन इंटरेस्ट था ओवरऑल मार्केट्स. ये 6 स्ट्राइक के 6 और 6 12 और पुट. उसके बाद अगर आप देखने जाओ तो 12:42 के बाद 8 करोड़ वाला कॉल हो गया सीधा 12 करोड़ और पुट में ओआई घटा. दैट मींस पुट सेलर्स स्क्वायर्ड इट अप एंड कॉल सेलर्स केप्ट ऑन पाइलिंग पोजीशन. देखिए अगर ये मार्केट में आप ट्रेंडिंग ओआई चार्ट पे आपको नॉलेज नहीं है, बहुत टफ है. आप वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेंड ट्रेड नहीं कर रहे. ऑल योर ट्रेडिंग इज इंट्राडे ओवरनाइट वॉलेटिलिटी एंड एक पर्टिकुलर लेवल्स जाके एक्सपायरी प्लेस आ जा रहे हैं मार्केट में. मींस ये लेवल के ऊपर मार्केट जा नहीं सकता. दैट इज वेरी वेरी क्लियरली एंड वेल डिफाइंड द मोमेंट यू सी द ट्रेंडिंग वाई प्राइस चार्ट्स. आज देखते 12:42 में क्या हुआ. लेट्स गो टू माय प्लेटफॉर्म. This is Nifty. I'll go to my 5 minutes time frame charts. If you see at 12:42, मतलब 12:42 पे 12:42, somewhere around here. Here it was very very clear that देखिए सिर्फ डेज लो तोड़ना नहीं था. The moment it came here, it was not like breaking just the days low. Right? यहाँ पे आपका OI crossover ने भी दिखा दिया कि now the call sellers are aggressive and very active. Everybody got it. Here it was a clear. फिर सारा hope छोड़ दो अब bounce का, pull back का, reversal का. Everybody getting it? I have a question from backbencher trader 6545. मार्केट कभी भी बुरी तरह नीचे आ सकता है. I don't know what you are saying. Sir, please don't post such questions. I think fine.
I think somebody is disturbing the sessions, putting said market will come down to 19,000 levels. Uh, Mr. Backbencher Trader 6545, please be realistic and follow the etiquette of attending a sessions and avoid posting unnecessarily questions. Uh, Fine. Okay, I guess he has left. Thank you so much for leaving, sir. So now let's start. So यहाँ से क्लियर था. देखिए और एक चीज आपको जो ट्रेंडिंग ओआई में देखनी है ना, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है, फॉर एग्जांपल आज ये था, सो इट वाज 23,966, तो 24,000 है. एक बार जाके ऑप्शन चार्ट में 24,000 का देख लो स्ट्राइक. क्या 24,000 होल्ड करेगा? लेट्स मी गो टू 24,000. अगर हम 24,000 का स्ट्राइक दे रहे हैं ना, तो देखिए वहां पे भी कॉल राइटर्स एक्टिव हो गया. दैट मीन्स को एटीएम बेच रहा है जोर से. गेटिंग इट एवरीबडी? व्हेन सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस कम्स, उस टाइम आपका ऑप्शन चार्ट्स देखना आपको वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का. गिव मी अ यस एवरीबडी. I'll wait for your yes or a no. Yes, these are small things which you have to keep in mind as a trader. ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. I guess that gentleman had left and I'm so thankful he has left the session. Sarita, how was your day today? कैसा था आज का दिन सरिता? होप तेजी में नहीं थे, आपने डेटा पॉइंट देखा. I'll just wait for Sarita because Sarita is new to our group. Yeah, Sarita, how was your day today? Did you watch all the data points today? Trending OI, individual option charts? Yeah. I'll wait for you, Sarita. Let me see whether you are saying good, bad, or ugly today. Okay. Take your time, Sarita. So now let's go to today's markets. So अभी मैं डेली चार्ट्स पे जा रहा हूँ. एंड रिमेंबर, जैसे हमने पहले भी देखा था कि दिस थिंग, ये एक ट्रंकेटेड वीक रहने वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का. दैट मीन्स गुरुवार को छुट्टी है. अभी ये निफ्टी है, राइट. देखिए निफ्टी में जो गैप्स है ना, इतने ज्यादा गैप्स है कि गैप पे एक बार मार्केट रुकता है. जैसे ये मार्केट गिर रहा था और ये गैप पे रुक गया, उसी तरह देखिए मार्केट बढ़ रहा था, ये गैप पे रुक गया. तो गैप का रेजिस्टेंस लेके हम स्विंग हाई एक्सपेक्ट करते, यहाँ पे रुकावट आएगी. कैन यू ऑल सी दिस? आज का अगर हाई देखो आप तो एग्जैक्टली गैप के आसपास था. हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस? जो सवेरे खुला, सो गैप की जो पूरी कैंडल है मैं उसी को ले लेता हूँ. I'll take the entire gap candle. Okay, I got a response from Sarita. Sarita is saying, didn't trade watch the levels, was tempted to buy P when they were crossover. Okay, Sarita, that's okay. But good, you are getting confidence, Sarita. So now देखिए, सबसे पहले ट्रेंड है ही नहीं मार्केट में, साइडवेज है. मार्केट क्या कर रहा है ना, गैप टू गैप ट्रेड कर रहा है. रिमेंबर दैट. ये गैप के आसपास आया और अभी वापस ये गैप के आसपास आया. So trend does not exist. Volatility is what you are trading right now. आप अभी ट्रेंड नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रहे हो. Now एक चीज हमने देखा था कि मार्केट ने 50 दिन का एवरेज क्रॉस किया था. देखते हो 50 दिन का एवरेज आज की तारीख में कहाँ पे. So I'll go to the 50-day moving average. So far market is above the 50-day moving average. तो हम क्या 50 दिन का एवरेज और ये गैप को एक सपोर्ट मान के चलेंगे फॉर टिल इट्स वी आर नॉट ब्रीच्ड. सो ये पूरा गैप और मैं सपोर्ट ले रहा हूँ जो कि 23,700 का है. मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, ये रेड कैंडल का लो ले रहा हूँ और इस दिन का 50-डे एवरेज ले रहा हूँ. सो ये मेरा सपोर्ट हो गया. ऊपर में इफ आई एम गोइंग टू सी द रेजिस्टेंस, टुडेज हाई एंड दिस गैप ओवर हियर कैंडल इज माय रेजिस्टेंस. सो मार्केट ने एक क्लियरली अपना दायरा डिफाइन कर दिया वॉलेटिलिटी का, and probably we are likely to trade in this range. Yeah, I'll take all your questions. Give me a second. Today market took support near 20 DMA. April Fool 3006. Okay. But remember one thing, today's candle जो है ना, आज की जो कैंडल है ना,
इसको बोलते हैं परफेक्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल. Why do we call it as a perfect downward bar reversal is मैं आपको बार चार्ट पे ले जा रहा हूँ. So if you see market opened, went above yesterday's high, broke the yesterday's low and closed below yesterday's low. So this is what we call a perfect downward bar reversal, which says that a short-term high is in place. Uh, इसके पहले perfect downward bar reversal कहाँ मिला था? Let's go and check it out. This was engulfing बोल सकते हैं इसको. It's a bearish formation. So it says that abhi a resistance is here to stay and market is likely to stay volatile in this range. Everybody got it? So today's pattern is April Fool. Hi Madhur, how are you, man? He's a okay. Yeah, Madhur. I don't know. Okay, you joined Madhur today. Yeah. So we have Madhur is a great friend of mine joining this session. Right. So we are going to stay in this range, but don't chase momentum after a rise in price on the upside. Don't chase momentum after a decline in price on the downside. आपको लगेगा अभी नहीं बहुत बढ़ गया और बढ़ेगा मत करो. Why? Because गैप का रेजिस्टेंस है. आपको लगता है बहुत गिर गया और गिरेगा, रुक जाओ. It's at the support. So market में you need some robust plan to trade. I can only outline the structure out there. So this is Nifty now. तो अभी देखते हैं 50 डीए में 23,700 की तरफ मार्केट जा रहा है. क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रही है? थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, अभी इतना क्लियर नहीं है. सो इफ आई टेक दिस हाई एंड जॉइन टुडेज हाई एंड इफ आई टेक द लो एंड जॉइन टुडे लो, मैं वेज जैसा देख रहा था बट नो, वी डोंट हैव ऑल द लेग्स. सो बी प्रिपेयर्ड, चॉपिनेस ट्रेड करो 23,700 और 24,000 के बीच में. 24,100 से 400 पॉइंट के रेंज में मार्केट अप डाउन करता रहेगा टिल वी डोंट गेट फर्दर साइंस. 400 points, I'll write it down. Range. So you are not trading trend, all you are trading is volatility. और कल आई थिंक सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है बिकॉज थर्सडे छुट्टी है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी. आर यू ऑल अवेयर ऑफ दैट? सो मार्केट का ट्रू टेस्ट अभी जो आएगा ना वो 50 डे पे आएगा. Till that, it will just trace out volatility within this 400 points range. Now let's go and have a look at Bank Nifty. Yeah, Madhur. Here, Madhur, in these sessions at 3:45, we only do Nifty and Bank Nifty on daily charts, Madhur. And in the morning at 3:45, we go and check the intraday charts, 15 minutes, 5 minutes, what strategy to use. So now this is Bank Nifty. Let me go to the 50-day moving average, the template which we are following right now. So Bank Nifty also gap down above 50. बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो हो क्या रहा है कि जो 50 दिन का एवरेज है वहीं पे गैप पे स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है. सो दिस इज द स्विंग हाई एंड द गैप, इट डिड नॉट टच दैट. सो ये हाई है सेटअप में और ये जो गैप है और 50 डीए में, तो आपको क्या पूरा ये लेना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ बैंक निफ्टी इज आल्सो पोजीशन्ड. सो जो स्विंगिंग वॉलेटिलिटी है, 2-3 दिन ऊपर 2-3 दिन नीचे, वो कंटिन्यू रहने वाला है. दैट्स व्हाट मार्केट इज शोइंग. सो इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, क्रेडिट स्प्रेड वाले, उनको एक बार रेंज पता चल जाता है ना. सो इट्स such markets works very well, arranging market for credit spread traders. देखिए ऐसा एक तरफा मार्केट रहता है ना, आपने कॉल बेचा तो आपका पोजीशन कट जाएगा. बट ऐसा साइडवेज मार्केट रहता है, आपको पता है 400 पॉइंट में रेंज में. That's what we are seeing in the overall market. So once the call sellers or the put sellers are very active and they are in a comfortable position, it puts markets in the range. और ऐसे भी कुछ बहुत strong positive है नहीं which might create a very strong trigger on the upside. एक दिन आया था ट्रम्प साहब का, फिर से I think बोट वोट का I was watching the media and वापस everything is back to square one. So this volatility is not going to go away. So that's all from my side today on Nifty and Bank Nifty. Don't unnecessarily try to force big trades. All your trading is volatility. मैं लिख देता हूँ.
and keep on trading this within a defined band or within a defined support and resistance or with whatever indicator you want to define. Somebody says you want to define it with Bollinger Bands, fine. Go to your intraday charts, hourly पे चले जाओ, then your band is defined. So देखिए जब market band में हो ना, तो have a strong understanding of band studies. मैंने आपको ATR band I have shown it to you. Then you have Bollinger Bands, then you have Kelter channels, VWAP bands. तो देखिए मार्केट का जो अभी जो मूवमेंट है वो साइडवेज रेंज बाउंड वोलेटाइल है. तो व्हाट वर्क्स राइट नाउ इन मार्केट इज बैंड स्टडीज, राइट? And in such markets, when market is at a resistance which is a gap and also support which is a gap, which says that don't chase momentum, right? So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Yeah, I'm apologies today. I think कुछ tech issue आ गई थी, session हुआ नहीं morning में. So again, regular sessions again we'll have tomorrow at 8:45 for intraday. So that's all from my side. Thanks. Have a Shabaki. How was your day today? Jai Hind Investment. Vinod. Okay. So do share. कैसा रहा आज का दिन? Neutral. Why Shabaki? Neutral. Everything works so well. Your trending eye, you are master in trending. Why? It works so well. You had this crossover over here. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody.